थोड़ा लेफ्ट ले ना. साहेब समोर. साहेब समोर. समोर. वहिनी समोर. जरा झूम करना थोड़ा. समोर. दादा भाई नहीं समोर. सही है ना अभी. अरे ये अपना आगे दोन हात कमी पडत. कला आहे कला. थँक यू. हॅपी शुभेच्छा सर. काँग्रेस तुम्हाला. खूप चांगलं आहे. नमस्कार. सर्वप्रथम सर्वांचं स्वागत. थँक्यू व्हेरी मच फॉर बिंग हिअर. आणि 20 वर्ष झाले. हा प्रवास 3 जानेवारी 2003ला सुरू झाला होता. आणि आमचं सुदैव आणि नशीब की 20 वर्षानंतर 3 जानेवारी 2023ला अजूनही थिएटरमध्ये आजही चालू आहे. तर हा प्रवास, ही जर्नी तुमच्यावर शेअर करायसाठी आम्ही आलो आहे. यू वॉन्ट टू से समथिंग जीन्स? No, just thank everyone for being here 20 years ago and 20 years later we're all together. So thank you very much. So 20 years ago, when we started working together on Tujhe Meri Kasam, it was extremely different because it was unknown territory. It was almost like Alice in Wonderland. We entered a world where both of us, and I can speak this for Genelia also, because we didn't know anything about filmmaking. So everything was new. Camera was new, trolley was new, everything around, even the sound of roll camera, sound, lights, action, cut was new. The word Nagra to play the song was new. So all this, so yes, journey started with walking into an uncharted territory for us. And 20 years later, again, when I decided that I want to direct a film, it wasn't, I wouldn't say it was new anymore, but yes, something was definitely new. The words that I had heard before, saying that, are you ready? And roll camera, sound, and action. I was listening to them, but this time I was saying them, so that was new. Yeah, I think when we started off, we were newcomers. And today we've come to a point where I feel like a newcomer again because it's my first Marathi film. And Ritesh's first directorial debut. So I think whether you start 20 years before or whether you're 20 years later, there's a newness which keeps it going. And I think that's been our journey throughout. बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप लोग पहली बार कुछ करने जा रहे हो, फिर ऐसे लगता है कि सब लोग आप ही को देख रहे हैं. आप जो करने वाले हो उसको गौर से देखेंगे. तो मुझे ऐसा बहुत बार लगा कि मैं सेट पे जाऊंगा तो लोग मुझे देखने वाले और शायद जज भी कर रहे होंगे. और लेकिन वो दिन खास इसलिए था क्योंकि पहली बार मेरी माँ सेट पर आई थी और मुहूर्त शॉट उन्होंने दिया था. फिर उसी शॉट में मैं और जिनीलिया बेंच पर बैठे थे और अजय अतुल भाऊ का गाना चल रहा था, सुख कळले, जो मेरे इस फिल्म का सबसे फेवरेट गाना है. वो दिन जिनीलिया की माँ का बर्थडे था, 7 दिसंबर. और उस दिन पर एक्शन मेरे बड़े बेटे रियान ने बोला और कट छोटे बेटे राहिल ने बोला. तो ये एक बहुत ही अनोखा फैमिली मोमेंट था. तो ये डायरेक्टोरियल जर्नी जो शुरू हुई थी, ये मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल थी. Yeah, Genelia. The first, do you remember the first The first day. Yeah.
For me, माझं फर्स्ट टाइम मराठी फिल्म्समध्ये होतं. तो फॉर मी आय थिंक माय फर्स्ट एवर इंटरॅक्शन विथ डुईंग अ मराठी फिल्म. आणि मी खूप एक्सायटेड होतं की आय हॅव टू डू दिस इंडस्ट्री टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी. सो आय वॉज एक्स्ट्रीमली एक्सायटेड टू कम बॅक टू स्क्रीन. म्हणजे 10 वर्षाचा नंतर आय वॉज कमिंग बॅक टू स्क्रीन. अँड फॉर मी there was nervousness, there was excitement. आणि जे श्रावणीचा कॅरेक्टर होता, आय डोंट थिंक आय न्यू इट ॲज वेल टिल द फर्स्ट शॉट वॉज टेकन. म्हणजे वेन रितेश just told me how he wanted me to look and how he wanted that expression, I think that's the day I fell in love with Shravani as a character, and that's the day I wanted to be fully involved in it again. Oh, that reminds me, actually, I should share this with everyone. Do you remember the first day of shooting, and it was in Chembur, and you decided to surprise Riteish with the camera and that small little chit that you wrote for him, and to tell him that, you know what, it's a decision well made, and this is something that you should have gone to. You want to tell us about the camera that you got for him? Yeah, so I actually got him a director's lens as the first gift on the day of shoot, because he was a new director and I thought nothing better than the director's lens. So that was the first gift I gave him. But more than anything, I think I wrote a letter, and the kids wrote a letter to him as well. We are people who believe in letters. We've always been writing letters for the last 20 years. So I think those things just stay very special. Genelia, everybody should know this. आप जानते होंगे कि जेनेलिया एक लकी मैस्कॉट है, और इन्होंने वेरियस लैंग्वेजेस में, काफ़ी लैंग्वेजेस में पिक्चरें की हैं, और इनका एक रिकॉर्ड रहा है कि हर फिल्म जो लैंग्वेज में इन्होंने किया है, जो डेब्यू किया है, वो सुपर हिट ही रहा है. सो how does it feel to be, and you've done it with Wade. Wade seems to be your debut in Marathi, and then you have this impeccable record from Boys onwards to now. How does it feel? Was it stressful? Did it play on your mind even for a bit that, okay, here's yet another debut in yet another language? तो linguist निकली है. Yeah. No, I think what was playing on my mind is कि after 10 years will I be able to act. First of all, will I be able to be back to the camera first of all? So that kind of haunted me here and there. And but having said that, I don't look for results. I just look for the journey. मला जे journey म्हणजे जे journey आपण we go on, ते मला खूपच महत्त्वाचं वाटते की it's important to be most happy on that journey, and I feel that's for me the biggest thing. But yes, having something highly acclaimed and having something that's touched a lot of people's heart makes you feel special. It is the sixth industry. Marathi is my sixth industry, and it's my debut in Marathi, and I'm extremely happy that the film is doing well. So it doesn't break my record of anything. It just helps it grow. Yeah. Six industries. That's. I would have never been able to do this. Yes, it's just to constantly work and be relevant in 6 different languages over the last 20 years is something that is it's amazing. I think as a co-actor, not because I am her husband and we are partners, so I have to be proud. But I think it's a super achievement. It's just not doing films in 6 different languages. It's about connecting with people in the language of that state where people think that this personality is mine. And that is, and as a director, I'll tell you, that is a sheer quality of an actor and screen presence that she has on screen. That Thank you you. Connect. Correct. I've never told this to her, but yeah. Thank you. Because I've never spoken to her as a director. Yeah, rarely talking. Okay, Riteish, as a director, मुझे एक सवाल पूछना था कि आप वो लेंस के पीछे जो आप एक्शन कह रहे हो, जेनेलिया एक्टिंग कर रही है, वो प्रोड्यूसर भी है जो आपको भूलना नहीं चाहिए, और वो एक्ट्रेस भी हैं.
तो वो आपने एक्शन कहा और उन्होंने कुछ कमाल कर दिया, वो तो करती है। बेड में आप अगर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, आपको नज़र आ ही गया होगा क्योंकि आप डायरेक्टर हो। लेकिन एज एन एक्टर वो जो इनसिक्योरिटी होती है कि अरे बाप रे, नेक्स्ट शॉट में तो इसके सामने मुझे ही खड़ा होना है, ये मुझे खा जाएगी, अब क्या करूँ मैं, ये वाला चक्कर आपने कैसे संभाल लिया? वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हस्बैंड वाइफ की जो एक केमिस्ट्री है वो एक साइड, एक्टर और एक्ट्रेस फ्रेम में क्या करने वाले हैं, ये तो कोई अलग ही गेम है। नहीं, ये अक्सर होता था कि जब जिनीलिया क्या है ना कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, और जब वो परफॉर्म करती है, एंड मैंने पहले भी कहा कि आई एम अ बिग फैन ऑफ हर क्राफ्ट एज एन एक्टर। सो एक तो सीन्स ऐसे लिखे थे कि they were backed strongly for श्रावनी's कैरेक्टर, और फिर मुझे खड़े रह के रिएक्ट करना था। बहुत बार कम डायलॉग्स भी थे और डायलॉग्स भी थे, और लेकिन क्या था कि जब मैं देखता था कि उन्होंने सीन कर दिया तो मुझे लगता था कि यार इसने तो अभी खा लिया। अभी एज एन एक्टर जो आप सही कहते हो कि अरे मैं भी ऐसे क्या कहूँ जो ऐसे एटलीस्ट टक्कर का लगना चाहिए, पर मेरे अंदर का डायरेक्टर बोलता था कि अभी ज्यादा करोगे तो सीन बर्बाद हो जाएगा, सीन को बचाओ, सीन इज मोर इम्पॉर्टंट एंड डोंट ट्राय टू डू। इतना सीन नाही है. नाही इट्स, आणि कसं आहे की खरंच सांगतो मी तुम्हाला की आणि मी मुद्दामून हे मराठी आणि हिंदीमध्ये दोन्हीमध्ये सांगतोय, कारण आपले काही इथे बंधू आहेत, भगिनी आहेत ज्या मराठीमधून आले तर काही हिंदीमधून, तर मी दोघांसाठी सांगतोय की जेव्हा आपण एखाद्या चांगल्या कलाकारावर काम करतो, आणि ह्या चित्रपटाचं सौभाग्य असं आहे की जे कलाकार ह्या चित्रपटामध्ये त्यांनी काम केले ते खरंच सगळेच उत्तम कलाकार आहेत, आणि शुभंकर पण इथं आहेत. पण जिनिलियामध्ये कसं होतं की मी त्यांना ऑब्व्हियसली 20 वर्षांनी ओळखतो, त्यांच्यावर मी ह्यापूर्वी पण काम केलेलं आहे, पण कधीतरी वाटतं की बाबा, आणि ज्या पिक्चरमध्ये काम केले त्या पिक्चरमध्ये त्यांनी मला खाल्लंय. तुझे मेरी कसम मध्ये असेल, तेरे नाल लव हो गयामध्ये असेल, आणि हे दोन्ही रिव्ह्यूज जर तुम्ही वाचले तर तुम्हाला वाटेल की जिनिलियांचा रोल हा तगडा होता आणि त्यांनी माझ्यापेक्षा चांगलं काम केलं. आता मॉडेस्ट रहते. हा हे माझं चालू आहे सध्या. आणि ह्यावेळेस मला वाटलं की आता मराठीमध्ये आले ना, आता मी दाखवतो, असा विचार करून मी आलो होतो की ही आता माझ्या जमेची बाजू आहे, अब मैं दिखाता हूँ, क्योंकि अब मराठी में है, मराठीमध्ये मी बघतो, पण आता काय बघतो. आणि त्यांनी जेव्हा काम केलं मला वाटलं इथं पण हेच तोच हाल आहे जो पूर्वी होता. तसं नाही यार रितेश, प्लीज मला एम्बॅरस नाही करायचं. नाही मी ॲज अ डिरेक्टर सांगतोय, कौतुक करायचं म्हणून नाही, पण काय असतं की एखादा चांगला कलाकार जेव्हा तुमच्या समोर काम करतो तेव्हा तुम्हाला कुठेतरी वाटतं की, आणि ग्रोथ प्रोग्रेस, मला असं वाटतं की एक सेन्स ऑफ मॅच्युरिटी 10 वर्षांत त्यांनी जरी काम केलं तरी ह्या कॅरेक्टरमध्ये जी श्रावणीचं कॅरेक्टर आहे ते ॲक्च्युली अतिशय मॅच्युअर कॅरेक्टर आहे. यापूर्वी त्यांनी म्हणजे तेरे नाल लव हो गया किंवा तुझे मेरी कसम त्याच्यासारखं कॅरेक्टर नाही आहे, किंवा इतर चित्रपटात त्यांनी जे कॅरेक्टर्स केलेले जे लोकांना ह्यापूर्वी बऱ्याच भाषेत भावले पण असतील तसं कॅरेक्टर नहीं है. ये किरदार बहुत अलग था जो पहले किरदारों से था, और इसलिए मुझे लगा कि इसमें जो मैच्योरिटी थी वो एज एन एक्टर देखकर आई वाज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड एंड एक्साइटेड टू वर्क विद.